हम स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 6 फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री बीएससी टॉपिक है हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। फर्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियोमेरिज्म? A option, structural isomers have the same connectivity but different spatial arrangements, while stereoisomers have different connectivities. B option, structural isomers have different connectivities while stereoisomers have the same connectivity but different spatial arrangements. C option, structural isomers have different molecular formulas while stereoisomers have the same molecular formula. D option, structural isomers are always chiral while stereoisomers are always achiral. Now the answer is B option, that is structural isomers have different connectivities while stereoisomers have the same connectivity but different spatial arrangements. Alright, now the explanation. Structural isomers differ in the connectivity of their atoms while stereoisomers have the same connectivity but differ in the spatial arrangements of atoms. Alright, now types of isomerism. Which of the following is true about enantiomers? They are non-superimposable mirror images. They have identical physical and chemical properties in a chiral environment. They are superimposable on each other. They differ in molecular conductivity. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? enantiomers के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। They are non superimposable mirror images. Explanation क्या होगा? Enantiomers are non-superimposable mirror images of each other and often exhibit different behaviors in chiral environments. Now, optical isomerism. What is the significance of a stereogenic center in a molecule? It determines the molecular formula. It is a center of symmetry in the molecule. It leads to optical activity. If present, it causes the molecule to be achiral. And the answer is option number C. It leads to the optical activity if present. ठीक है, इसका explanation क्या हो जाएगा? A stereogenic center, often a carbon with 4 different substituents, leads to optical activity by creating non-superimposable mirror images, that is enantiomers. Which state is correct about क्या है ये? Diastereomers. ठीक है, which statement is correct about diastereomers? They are a type of structural isomer. They are superimposable mirror images. They have different physical and chemical properties. They have identical physical and chemical properties. इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी. They have different physical and chemical properties. Explanation क्या हो जाएगा? Diastereomers are stereoisomers that are not mirror images of each other and have different physical and chemical properties. What is a mesocompound? Mesocompound किसे कहेंगे हम? A compound with 2 stereogenic centers that is optically active. A compound with 2 stereogenic centers that is optically inactive due to an internal plane of symmetry. A compound with 1 stereogenic center that is optically active. डी ऑप्शन है हमारा कंपाउंड विदाउट एनी स्टेरोजेनिक सेंटर, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी. अ कंपाउंड विद 2 स्टेरोजेनिक सेंटर्स दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एन इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसका एक्सप्लेनेशन देख लो. अ मेसो कंपाउंड has 2 or more stereogenic centers but is optically inactive due to the presence of an internal plane of symmetry. सेम है, सिमिलर है. ठीक है, resolution of enantiomers. What is meant by the term resolution of enantiomers? मतलब क्या है इसका? Separating a racemic mixture into its individual enantiomer, combining enantiomer to form a racemic mixture, converting enantiomer into diastereomers, changing the configuration of stereogenic center. And the answer is A option, that is separating a racemic mixture into its individual enantiomers. Explanation हो जाएगा कि resolution of enantiomers refer to the process of separating a racemic mixture into its individual enantiomers.
अब हम पढ़ेंगे इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन. What is inversion in stereochemistry? The change of configuration from R to S or vice versa at a stereogenic center. The interconversion of conformational isomers. The separation of enantiomers from a racemic mixture. The formation of a racemic mixture from pure enantiomers. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. That is the change of configuration from R to S or S to R at stereogenic center. ठीक है. Inversion is the process by which the configuration at a stereogenic center is reversed, such as converting from R to S configuration. ठीक है. What is the difference between retention and racemization? A option है retention refers to maintaining the original configuration, while racemization involves forming a racemic mixture. B option है retention refers to changing the configuration, while racemization involves maintaining the original configuration. C option है हमारा retention is a process used in resolution of enantiomers, while racemization is used in inversion. D option है retention involves separating enantiomers, while racemization involves converting enantiomers into distereomers. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए. And the answer is option number A. That is, retention refers to maintaining the original configuration. ठीक है. While racemization involves forming a racemic mixture. इसका explanation देखो क्या है. Retention of configuration means the stereogenic center retains its original configuration during a reaction, while racemization refers to the conversion of an optically active compound into a racemic mixture. Next topic, relative and absolute configuration. Which of the following best describes the concept of relative configuration? आप लोग पढ़िए ये सब. मैं आपको टाइम दे रही हूँ पढ़ने के लिए. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स अराउंड अ स्टीरियोजेनिक सेंटर रिलेटिव टू अनदर स्टीरियोजेनिक सेंटर इन द सेम मोलिक्यूल. इसका एक्सप्लेनेशन देख लो. रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू द स्पेशल arrangement of groups around a stereogenic center in relation to another stereogenic center within the same molecule. सिमिलर ही दे रखा है वैसे. अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस रूल्स, D and L and R and S systems of nomenclature. What is the purpose of sequence rules in stereochemistry? पर्पस क्या है इनका? आप लोग ऑप्शंस पढ़ेंगे. मैं आपको टाइम दे रही हूँ. And the answer is option number A. That is to determine the priority of substituents around a stereogenic center. इसका explanation क्या होगा? Sequence rules are used to assign priorities to the substituents around a stereogenic center, which helps in determining RS configurations. What is the key difference between DL and RS system of nomenclature? आप लोगों को टाइम मिल रहा है. आप लोग प्लीज़ पढ़िए और इसका ऑप्शन जो आपको लग रहा है कमेंट में कर दीजिए, भले ही वो गलत हो. ठीक है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. दैट इज DL सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑप्टिकल रोटेशन, वाइल RS सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. ठीक है. इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द DL सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन शुगर्स एंड अमोनिया एसिड्स, while the RS system is based on the special arrangement of substituents around a stereogenic center. Next topic है हमारा geometric isomerism. Which method is used to determine the configuration of geometric isomers? स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी.
And the answer is option number C, that is X-ray crystallography is a powerful method used to determine the three-dimensional arrangement of atoms in geometric isomers. ठीक. Next, what type of isomerism is observed in oxymes? oxymes में किस तरह की isomerism पाई जाती है? Structural, geometric, optical, conformational. तो ऑक्साइम्स में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पाई जाती है. ठीक है. ऑक्साइम्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड द C डबल बॉन्ड N. ठीक है. कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड लीडिंग टू डिस्टिंक्ट E and Z isomers. Conformational isomerism. What is the main feature of the Newman projection? आप लोग पढ़ेंगे इसको या मैं ही पढ़ूँ? It represents the spatial arrangement of atoms around a stereogenic center. It depicts the conformation of a molecule by looking down a specific bond axis. It shows the three-dimensional structure of carbohydrates. It distinguishes between enantiomer and diastereomers. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. It depicts the conformation of a molecule by looking down a specific bond axis. इसका explanation क्या हो जाएगा? The Newman projection is a way to visualize the conformation of a molecule by looking down the axis of a specific bond, showing the spatial arrangement of groups around that bond. ठीक है. अब आ गया हमारा what distinguish a configuration and conformation. ठीक है. configuration फ्रॉम आ कन्फर्मेशन. डिफरेंस बताना है. डिस्टिंक्ट क्या डिस्टिंक्ट करता है. ठीक है. आप लोग पढ़ेंगे. कॉन्फ़िगरेशन रिफर्स टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ड्यू टू सिंगल बॉन्ड रोटेशन वाइल कॉन्फर्मेशन इज फिक्स्ड. बी ऑप्शन पढ़ें, सी पढ़े एंड डी पढ़ें. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कॉन्फ़िगरेशन इज फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी चेंज विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स. बिल्कुल सही है. ठीक है. कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो सेम रहेगी. जब तक बॉन्ड टूटेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं भागेंगे, तब तक कॉन्फ़िगरेशन सही रहेगी, बिल्कुल फिक्स रहेगी. वाइल कन्फर्मेशन कैन चेंज बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड्स. ठीक है. एक्सप्लेनेशन देख लो. Configuration refers to the fixed spatial arrangement of atoms that cannot be changed without breaking chemical bonds, whereas conformation refers to the spatial arrangement of atoms that can change by rotation around single bonds. Thank you. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you. मैं प्लेलिस्ट में ये वीडियोज़ ऐड कर रही हूँ, तो आपको सारी वीडियोज़ फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री में आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में. थैंक यू.